Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students of class 10th. This is subject history and we are discussing chapter number 6, that is post independence era of Jammu and Kashmir. So today our topic will be about social reforms, and in this topic we are going to discuss about growth of modern education. डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के बारे में कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर में मॉडर्न एजुकेशन की ग्रोथ होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज़ 1947 के बाद. तो इसमें ड्यूरिंग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला's regime, education was accorded top priority and viewed as the most important tool for meeting various challenges of the time and as an instrument for social and economic transformation. तो इसमें कहा जाता है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो पीरियड था, का जो रिजीम था, उसमें एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी दी गई और इसको एक इम्पॉर्टेंट टूल कंसिडर किया गया था एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. So it is also said that about 35% of annual budget was spent on the expansion of education and development of education infrastructure. तो इसमें हम देखते हैं कि तकरीबन स्टेट का जो टोटल बजट था उसमें से 35% ऑफ द एनुअल बजट जो था वो स्पेंड किया गया ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. Sheikh Mohammed Abdullah pleaded for changes in the outdated syllabi and for making agricultural education compulsory in village education. Sheikh Mohammed Abdullah ने क्या किया, उसने जो सिलेबस जम्मू एंड कश्मीर इससे पहले जो पढ़ाया जा रहा था वो उसको आउटडेटेड माना गया. इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली लाई गई और इसमें क्या एक ख़ास तब्दीली ये लाई गई कि इसमें एग्रीकल्चरल एजुकेशन कंपलसरी रखा गया, ख़ास करके विलेज स्कूल्स में. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आल्सो स्टैंडर्डाइज्ड द एजुकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक और काम ये किया कि टॉप टू बॉटम का जो एजुकेशन सिस्टम था जम्मू एंड कश्मीर का, इसको स्टैंडर्डाइज किया. जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज वर इंट्रोड्यूस्ड. इसमें इस सिलेबस में, इस करिकुलम में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए और फीमेल एजुकेशन, खास करके फीमेल एजुकेशन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स रखे गए. इसके अलावा an intermediate college exclusive for girls was established in Srinagar and Gandhi Memorial College for Women was established in Jammu. तालीमी नुस्वा जिसको हम कहते हैं, गर्ल्स के लिए खुसूसन अलग अलग कॉलेजेस को एस्टैब्लिश किया गया. श्रीनगर की बात अगर हम कहीं करेंगे तो श्रीनगर में एक अलग कॉलेज गर्ल्स के लिए एस्टैब्लिश किया गया. इसी तरह जम्मू में भी एक कॉलेज की बुनियाद डाली गई, एक कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया, उसका नाम था गांधी मेमोरियल कॉलेज फॉर वुमेन. द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1948. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. जो जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश जब किया गया था वो कब किया गया था, 1948 में. The new government also constituted a textbook advisory board in 1948 with the Prime Minister of the state as its chairman to prepare new textbooks to meet the contemporary challenges. जम्मू एंड कश्मीर जिन चैलेंजेस का सामना कर रही थी, इसके लिए एक नई गवर्नमेंट को तश्कील किया गया. A textbook advisory board was constituted in 1948 और इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट था. इसने न्यू टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर किए टू मीट द कंटेम्परेरी चैलेंज. द विजन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन रिसीव्ड फर्दर इनपुट्स ड्यूरिंग Bakshi's reign with the full financial backing of the central government. जिस तरह से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ते आ रहे थे उसमें भी हमने देखा जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो था उसको रियलिटी में उसको प्रैक्टिकल शेप देने का क्रेडिट जो था खास करके वो बख्शी गुलाम मोहम्मद
کو جاتا ہے. اسی طرح سے ماڈرن ایجوکیشن کی بات اگر ہم کریں گے, ماڈرن ایجوکیشن میں بھی فردر جو انپٹس ہمیں دیکھنے کو ملے وہ بھی جورنگ بخشی زرین میں ہم دیکھنے کو ملتے ہیں. اور بخشی غلام محمد کا ویژن جو تھا وہ ڈفرینٹ تھا فرام شیخ محمد عبداللہ's ویژن. اس سے پہلے ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ شیخ محمد عبداللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی فائنانشیل ایڈ گورنمنٹ آف انڈیا سے کلیکٹ کرے, گورنمنٹ آف انڈیا سے حاصل کرے, لیکن بخشی غلام محمد کا ویژن یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کچھ فائنانشیل اسسٹنس ہمیں پرووائڈ کرے تاکہ ہم بھی اپنی ریاست, اپنی اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کو ڈیولپ کر سکے. Following were the main highlights of the state government's education policy during this period. بخشی غلام محمد کا جو دور تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے کون سے اقتدامات, کون سے میجرز, کون سے سٹیپس اٹھائے گئے تھے ایجوکیشن سسٹم کو ماڈرنائز کرنے کے لیے. اس میں پہلا سٹیپ اٹھایا گیا تھا that the salaries of the teachers were significantly increased. سیلری جو ٹیچرس کی تھی اس کو انکریز کیا گیا and education from primary to university level was made free. اور ایجوکیشن جو تھی, تعلیم جو تھی وہ پرائمری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک اس کو مفت کیا گیا, فری کیا گیا. A network of educational institutions for primary, middle and higher education were opened. ایک نیٹورک ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, بہت سارے تعلیمی ادارے پرائمری ڈپارٹمنٹ کے لیے, مڈل ڈپارٹمنٹ کے لیے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے کھولے گئے. اور ان ڈپارٹمنٹس میں, ان اداروں میں کچھ جاب اورینٹڈ ایجوکیشنز بھی انکارپوریٹ کیے گئے کریکولم میں. ٹیکسٹ بکس وائر پرووائڈیڈ ٹو دا پور اسٹوڈنٹس. اور جو غریب بچے تھے ان ڈپارٹمنٹس, ان انسٹیٹیوشنز میں, ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, ان کو فری ٹیکسٹ بکس پرووائڈ کی گئی. اینڈ اسٹیپس وائر ٹیکن ٹو ڈیولپ لینگویجز لائک کشمیری, ڈوگری اینڈ بوٹی اپارٹ فرام ادر ریجنل لینگویجز. جس طرح سے کچھ ریجنل لینگویجز کو ڈیولپ کیا گیا, اس طرح سے اس کے علاوہ کچھ اور بھی لینگویجز اس میں انٹروڈیوس کیے گئے, جسٹ لائک کشمیری, ڈوگری اینڈ بوٹی. ان کو ڈیولپ دینے کے لیے ترجیح دی گئی. So بچوں, that was all about our today's topic, that is social reforms and growth of modern education. So I hope you have understood what I was delivering. So Allah Hafiz.